Hello children, I am Santi Soni and I warmly welcome you to World Audiobook. I am very happy that all of you have decided to join us. On this journey, our aim is to provide children with both education and entertainment. So dear children, today we will study about addiction or habits related to substance abuse in teenagers. Adolescence is a period between 12 to 18 years and a process during which a child becomes mature in terms of attitude and beliefs for effective participation in society. It is marked by physical growth, development of reproductive organs, and changes in the functioning of neuroendocrine system of the body. It is accompanied by the several psychological, behavioral, and biological changes. Dear children, curiosity, needs for excitement, adventure, and experimentation are common causes that motivate our youngsters, young boys and young girls towards use to alcohol and drugs. The first use of drugs and alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later on youngsters starts its use to escape having problems. The stress from pressure to excel in examination or academics has played a significant role in persuading the youngsters to try drugs and alcohol. Movies, television, newspapers, internet, advertisements, depression, frustration, uncertain pressure, feeling of independence, self-identity, and false belief, etc. also help to promote smoking, drugs, and alcohol abuse. Unstable or unsupporting family structure and peer pressure are the other factors that have found to be associated with this problem. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में उनके शरीर में जो अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं, उनका शारीरिक बनावट, उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन के सीक्रेशन से उनके शरीर में एक ऊर्जा का जो संचार होता है, अगर उस ऊर्जा को हमारे विद्यालय, उस किशोर के परिवार और समाज के द्वारा जब एक सही दिशा नहीं दी जाती, तो उनकी ऊर्जा सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाती है। और जब वह ऊर्जा सकारात्मक रहेगी तो किशोर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। ऐसे समयों में हमको विद्यालय को, किशोर के परिवार को, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, उनकी जिज्ञासाओं को, उनके कौतूहल को समझाना है, शांत करना है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना है। अगर हम सब ऐसा नहीं कर पाते, तब तो फिर ये किशोर व्यसन की ओर बढ़ जाते हैं